Okay, so let me revise what we were discussing yesterday. So we defined ideal of a ring R. So it has to be a subring first, right? So if we have a subring of a ring, then we know that when it is said to be ideal, if for all R belongs to R, A belongs to I, AR belongs to I, RA belongs to I. So we call it a two-sided ideal. And then we had example of that NZ is an ideal of Z. So it was very easily verified that NZ is an ideal of Z. This was one example we did. Another example which I told you was the 0 and R are trivial ideals of any ring. So any ring is always going to have these two ideals, the 0 ring and the R. And now we are going to move towards more examples of ideals, and slowly we'll build up the concepts where we are going to use ideals and how we are going to connect this with the integral domains and the fields. Okay, so let me go to the next example. So the next example of ideal which I am going to take is this. So let R be commutative ring with unity and A belongs to R. So let A be any particular element of the ring. Then the set, so this is the notation. This is called generated by A. R belongs to R is an ideal of R. And this is called principal ideal generated by A, right? So this is R, these are the kind of elements. So what you have to do is, now we are trying to learn generating ideals, that given a particular ring, how we can find, how we can generate one ideal. So all what you have to do is pick up one element of the ring and then define this set. So this set contains that elements will be multiplied with all the other elements of the ring, right? This itself is also of a ring, but then it needs to be multiplied with all the other elements of the ring. So the kind of elements which will be here, the kind of set which it will form an ideal, and this will be known as principal ideal generated by A. This is similar to as we had the generators in the cyclic group. In the group theory we had the generators, that an element is acting as a generator because every other element is being written as a product of the same element, that element added to itself so many times. So from where there the term generation is coming. So it's easy to understand. एक एलिमेंट लो, उसको रिंग के बाकी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, जो सेट बनेगा हमें अभी प्रूव करना है कि दैट सेट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ideal, right? So means it's an ideal, it's called the principal ideal. So it's very easy how you are going to check it is an ideal. Ideal के लिए आपको क्या चेक करना है कि it should be a subring, right? First it should be subring and then it should be satisfying that additional property. So subring के लिए we know that AB belongs to I. So let me call this set जिसको हम ideal check कर रहे हैं, proof कर रहे हैं. Let me denote this with I. So this is RA. R belongs to R, where A is also the element of R. So for subring, we are supposing let XY belongs to I. So we have to show x minus y belongs to I, and we have to show x into y belongs to I. So if xy, since x and y belongs to I, it implies x is some r1 times a and y is some r2 times a, because all the elements in this I are nothing but multiples of a. So how x and y are going to look? X will be some multiple of a and y will be another multiple of a, where r1 and r2 are going to be some specific elements of the ring. And then what is x minus y?
So it's R1A minus R2A. So we obviously can write it like this because of the distribution. The multiplication distributes over addition as well as subtraction. So we can use that distribution law, and because of the commutativity present, so it's fair. So it's R1 minus R2 into A. So R1 minus R2 is going to be some, obviously, R3, because R1 minus R2 is also going to be an element of R, because R is a ring. So if R1 is there, R2 is there, the subtraction is also there. So this R3 is going to be an element of R. So this clearly shows that since x minus y can be written as multiple of A, so it implies x minus y belongs to I, because I contains these kind of elements. And now next we have to show is x into y. So x into y belongs to I. So you just use x into y is x is R1A, y is R2A. So this is R1, R2, A into A, right? So these all are elements of R, the ring. So this is some R4 times A, where R1, R2. And we're already given that R is commutative. So why do we need to prove it? I'm not proving commutativity anywhere. No मैम एक ma'am, बार पेज पे x y दिखाएंगे? equal to yx होगा ना automatically. I don't know what is your question. I'm not going to prove xy is yx. प्रूफ तो नहीं कर रहे मैं, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स तो मैं प्रूफ कर ही नहीं रही हूँ. मैं तो ये प्रूफ कर रही हूँ कि x इंटू वाई आई में है. तो मैं ये Yes ma'am. प्रूफ कर रही हूँ कि x इंटू वाई को हम a का मल्टीपल लिख सकते हैं. I got confused ma'am. Yeah, so I'm not proving commutativity, I'm using commutativity, not proving it, right? Is it clear to everyone, or should I explain Yes it ma'am. again? It's just I'm using subring test, right? कि दो elements हमने suppose कर लिए. Now we want to show their subtraction is there and their product is there belonging to that set. तो उसके लिए we have to show that subtraction element x minus y is also of this kind, some multiple of a, and the product element is also of this kind, some multiple of a. So firstly I choose x and y belongs to I, so individually they are of this type, and then I take their subtraction. So this turns out to be this. So this is nothing but looks like a multiple of a, therefore they belongs to I. Now I am showing the next part, xy belongs to I. So xy belongs to I, so I consider xy, I put the value of x and y. Now I'm just using the commutativity, right? Because I just shifted these products, associativity and commutativity in combination I'm using. So this is R4 times A, because this element is going to be the element of the ring, because A is also an element of the ring, R1 and R2 are also the elements of the ring. So R4 belongs to the ring. So x into y is also being written as a multiple of A. It implies xy also belongs to I. So we have proved that I is a subring of R. But what needs to be shown that I is an ideal. तो जब भी आपको आइडियल प्रूव करना है तो उससे पहले आपको सबरिंग प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज एंड एवरी आइडियल इज अ सबरिंग. पहले वो सबरिंग होना चाहिए, उसके बाद द एडिशनल कंडीशन ऑफ आइडियल विल कम. So to show the additional condition of ideal, what is the definition of ideal? Definition of ideal is that for all R belongs to R, A belongs to I, we should have A into R belongs to I, or R into A belongs to I. So one of them is sufficient because the ring is commutative. And let me just change the notation, because A जो है हमें ये specific element given है जिससे ये ideal generate हो रहा है. So यहाँ पे let me don't use A, let me use X. So let's take this notation. So we have to show X into R belongs to I, right? So consider X into R, because I have to show it belongs to the ideal. Now where is X? X is already in I. So it implies, because ये दोनों चीजें हमें given है, हमें ये prove करना है. This is given. So X belongs to I means X is some multiple of A. So X is some, say, S times, yeah, okay, T times A, where T is an element of R, because that's how the elements of ideal looks like. They are multiples of A, where the multiple is the element of the R.
So x is t into a, so it's t into a into r, so which is again t into r into a, which is some s into a, because again I used the commutativity that I can switch their product and the associativity, we can say. So this is s into a. So x into r was the element you wanted to show it belongs to the ideal, so it's done because it is turning out to be a multiple of a, so this belongs to I. And this is happening for all r belongs to r because we consider r to be the arbitrary element. So prove ho gaya hai that I is an ideal of r, right? So it was very simple example actually. जब तक आप simple example में confident feel करोगे, then you will be going for the difficult example. So that's why I just gave you an idea that given a random set in front of you, how to check it is an ideal. So you have to go through all these steps. Firstly, prove it is a subring and then use the definition of the ideal. And this ideal is called principal ideal. So you need to remember this term because we will use this in further examples also. So whenever I will say principal ideal generated by this, so principal ideal के लिए मुझे generator बताना होगा कि किस element से generate हो रहा है, means उसमें किस elements के product elements हैं, right? So let me give you the example for the same. Okay, let me give you the example of this principal ideal. So you can have the example in the ring, say you have Rx. This is the ring of polynomial, say this is R, this is a real over reals. So we know it's an infinite ring containing all the polynomials. So in this, if I take, now how are the elements in this ring? The elements in this ring are polynomials in x of any degree. So I have to choose a particular generator. So an element belonging to the ring. So this any polynomial I can select. So suppose this is the polynomial I have selected, x square plus 1. So this is a symbol of generator. So what the elements of this are going to look like? So they are going to be some multiples of, right? Some gx times x square plus 1, where gx is going to be any particular polynomial, any arbitrary polynomial from the ring. So this is what the how the definition of a principal ideal looks like. It's easy, right? You just take a random element, arbitrary element, and multiply. So it will contain all the multiples of this polynomial in this set. And this is the principal ideal generated by this, right? Is it fine? Can you repeat it? X square plus 1 wala topic. नहीं, I'm just giving you see an example of principal ideal. Principal ideal की definition clear है आपको? Yes, प्रिंसिपल आइडियल इज जस्ट आपको एक रिंग का एलिमेंट मिलेगा, जनरेटर मिलेगा, आपको उससे एक सेट जनरेट करना है. उस सेट में किस तरह के एलिमेंट होंगे? उस एलिमेंट के सारे मल्टीपल्स होंगे. मींस उस एलिमेंट को आपको रिंग के जो भी अंडर कंसिडरेशन रिंग है उसके सारे एलिमेंट से प्रोडक्ट करना है. सो ऑब्वियसली ये बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इट विल बी अ सेट. तो ये जो सेट बनेगा हमने अभी इसको प्रूव किया है कि दिस इज गोइंग टू बी एन आइडियल ऑफ द सेम रिंग और उसको हम प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं. तो इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? फॉर एग्जाम्पल इसमें पॉलिनोमियल होगी इटसेल्फ, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स होगा बिकॉज एक्स क्यूब प्लस एक्स इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. इट विल हैव x square plus 1 into x square plus 1, it will have x square into x square plus 1. तो x square plus 1 के जितने भी मल्टीपल्स पॉसिबल हैं, ऑब्वियसली देर आर इनफाइनाइटली मेनी, सो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं इस सेट में चले जाएंगे. सो ये सेट जो है इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल. इट विल हैव एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन टाइप. I'll give you another example for the principal ideal. Say you can have the example in say Z, right? So in Z you can have the example. Okay, Z में तो वैसे भी जो हमने अभी प्रूव किया था NZ in general that this is an ideal of Z.
तो बेसिकली एनजेड भी प्रिंसिपल आइडियल ही होता है ना, बिकॉज एनजेड क्या है, एनजेड में क्या आते हैं, सारे मल्टीपल्स ऑफ एन. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. एनजेड में सारे आपके कौन से इंटीजर्स होंगे, -3n, -2n, -n, 0n, 2n, 3n. तो पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स को आपने एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट इज व्हाटएवर इट इज, इट्स एन पॉजिटिव इंटीजर. This is also an ideal, and this is actually the principal ideal because it is generated by a single number, that is n. So I'm giving you examples of principal ideals because these examples are important. अब हमें further concepts को understand करने के लिए will need the examples of principal ideals. तो आपको ये principal ideal clear होना चाहिए that it's nothing but generated by a single element like this. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so let me move ahead with the more examples. So I'm giving you another example of ideal. Say again the same ring you can consider over reals, but this time it's different. So this be set of all polynomials with real coefficients. Yeah, okay, let me just write over reals. So now I'm going to give you an example of an ideal which is different than principal ideal. पहले तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ये एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल का था, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, आप ये भी एक आइडियल बना सकते हो, राइट, जनरेटेड बाय x. नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल. सो लेट a denote the set of all real polynomials. So you understand the meaning of real polynomials mean the coefficients are real with constant term 0, right, with constant term 0. Then this a which I have just defined is happen to be an ideal of the ring. So this is your ring under consideration R, which is Rx, the set of all real polynomials. अब वो उसमें सारे पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं. अब मैंने उसका एक सबसेट लिया, वो सबसेट में क्या है, सिर्फ वो पॉलिनोमियल्स लेने हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म 0 है ऑब्वियसली. सो ए क्लियरली जो है वो आपकी ओरिजिनल रिंग का सबसेट है. नाउ वी आर सेइंग कि ये आइडियल होगा उस रिंग का, मींस ये आइडियल वाली डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. सो आई एम लीविंग दैट टू यू, सो यू प्रूव इट योरसेल्फ. It's easy. I just shown you with the 2-3 examples that how to prove given a set is an ideal of the given ring. So you prove it yourself. अगर नहीं होगा then you can ask me in the next class, right? कि ये आइडियल बनाएगा. मैम जो गिवन रिंग होगी वो ऑलवेज कम्यूटेटिव रिंग होगी. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो आइडियल की जो डेफिनेशन है जिसमें हमने उसको टू साइडेड आइडियल डिफाइन किया है, दैट रिक्वायर्स कम्यूटेटिविटी. तो बाय डिफॉल्ट एवरी रिंग विच इज गिवन टू यू इज कम्यूटेटिव. अगर किसी रिंग में कम्यूटेटिविटी नहीं है उस केस में दे विल नॉट यूज द वर्ड आइडियल, then they will be using the word left ideal or the right ideal depending upon कि आपको जो रिंग के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, लाइक लेट मी टेल यू, जैसे हम कहते हैं आर ए आइडियल की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी है, ये दी है ना, ए आर एंड आर ए. सो वो जो एलिमेंट है रिंग का उसको आपने लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है कि राइट में मल्टीप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग. सो वो जो नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स हैं वहां पे यू विल हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल. सो वो बहुत रेयर एग्जांपल्स में होगा, वो आपको ऐसी रिंग्स मिलेंगी मैट्रिसेस वाली. सो देयर दैट नोटेशन विल बी. बट ऐसा नहीं है कि नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स में आपके पास टू साइडेड आइडियल नहीं होते हैं, वहां पे भी ऐसे आइडियल्स हो सकते हैं जो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई. जस्ट अ मिनट, ओके 1 सेकेंड. वहां पे भी ऐसे आइडियल हो सकते हैं जो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट मतलब उसमें बिलोंग करेंगे, राइट? क्योंकि जब ये डिफाइन कर रहे हैं तो आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग ए आर एंड आर ए शुड बिलोंग टू दैट. बट अगर रिंग कम्यूटेटिव होगी तो ये दोनों सेम ही होंगे, राइट?
इज दैट क्लियर? दैट्स वाई जो आपको मोस्टली एग्जांपल्स मिलेंगे वो कम्यूटेटिव रिंग्स की मिलेंगी, बिकॉज अदरवाइज आपकी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। आपको फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको एलिमेंट को लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन वाला आपको चाहिए कि राइट मल्टीप्लिकेशन वाला आपको चाहिए। तो लेफ्ट आइडियल होगा या राइट आइडियल होगा उस केस में? Ma'am, but in the case of ring, it is always closed under multiplication. क्लोज्ड तो है बेटा, कम्यूटेटिविटी की बात हो रही है। नहीं मैम, वैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर हम रिंग में आगे सब रिंग उठाते हैं तो सब रिंग भी इटसेल्फ अ रिंग होती है, उसमें हाँ। अब एलिमेंट्स उठाते हैं, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी तो वापस सेट में जाएगी। बेटा वही तो मैंने देखो कल इतना टाइम लगाया था इस चीज पे आपको जो डिफरेंस समझाने के लिए। सब रिंग में क्या होता है कि आप सब रिंग के दो एलिमेंट्स लेते हो, ए बी सब रिंग के ही हैं, तब जब आप ए इंटू बी करते हो वो सब रिंग में जाता है। यहाँ पे ए एक जो है आइडल का है वो और एक आइडियल का है, दूसरा एलिमेंट रिंग का है। तो प्रोडक्ट करके आइडियल में जाए तो आइडियल ज्यादा बड़ी चीज होगी ना, क्योंकि रिंग में तो जाएगा ही, क्योंकि रिंग में तो सारे एलिमेंट्स, क्योंकि ए जो आइडियल का है वो रिंग का भी है, तो ए इंटू आर बाय डिफॉल्ट रिंग में तो है ही है। हम कह रहे हैं कि वो आइडियल में चला जाएगा, राइट? तो देर इज अ डिफरेंस यहाँ पे, दोनों एलिमेंट आप सेट सबरिंग से ही उठाते हो तब वो सबरिंग में आता है। यहाँ पे एक सबरिंग का है एक बाहर का है, मीन सबरिंग के बाहर का, मीन्स रिंग का तो है बट सबरिंग का नहीं है। तो देन इफ इट इज हैपनिंग, वो फिर भी उस मल्टीप्लीकेशन करके आप सेम सेट में आ रहे हो, तो देन इट इज समथिंग मोर देन अ सबरिंग, राइट? तो वही डिफरेंस आपको समझना है सबरिंग और आइडियल में। सबरिंग इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, आइडियल इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ये आइडियल है तो आइडियल के अंदर आप जितने मर्जी एलिमेंट्स के पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करी जाओ, क्योंकि आइडियल सबरिंग तो है ही है, तो वो होगा ही होगा, ए इंटू बी वहीं पे आएगा। बट जैसे एक बाहर का एलिमेंट उठा लेते हो उसको आइडियल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बोला जाता है कि बाहर जैसे हमने बाहर वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन की, दैट आंसर जो उसका रिजल्ट आया इज एब्जॉर्ब्ड इन द आइडियल ओनली, दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग एन आइडियल। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन अ सबरिंग एंड अ आइडियल, यस मैम। राइट? तभी तो हमें देखो तीसरी कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत पड़ी ना, अदरवाइज तो सबरिंग, फिर सबरिंग पे ही बात खत्म हो जाती, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने दो एक्स एंड वाई लिए थे वो दोनों आइडियल में से ही लिए थे, आई में से लिए थे, तो दोनों को मैंने ऑलरेडी सपोज किया था कि दे आर द मल्टीपल्स ऑफ ए, तो प्रोडक्ट को भी शो कर दिया मल्टीपल ऑफ ए। बट अभी हम आइडियल के लिए एक एलिमेंट मैंने आई से लिया है और दूसरा एलिमेंट मैंने रिंग से लिया है, तो सिर्फ x को मैंने a का मल्टीपल लिखा है, r को नहीं लिखा है। r is just any general element of the ring. So when I put this value of x t into a here, so then still I got this to be here. That's why it is an ideal. Okay, is all confusions gone? यस मैम। Okay, so these are the examples. This is an example I'm telling you, do it yourself. तो आपको ये खुद prove करना है, just like the way we did prove in the previous example कि ideal कैसे prove करोगे. I just explained it to you, so you try it yourself. And now particularly what kind of ideal, ठीक है आप ideal prove तो कर लोगे, but एक additional information है ये ideal कैसे होगा. So this ideal is actually going to be the principal ideal generated by x. Because you see, अब ऐसे पॉलिनोमियल्स बताओ, सपोज आप मुझे कोई भी पॉलिनोमियल बताओ जिसकी कांस्टेंट टर्म 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x cube minus 3x square plus 40 times x. So you can obviously give me infinitely many examples of the polynomials of any degree over reals with constant term 0. Is it true? आप कितनी भी एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो ना. ऑल ऑफ दीज हैव वन थिंग इन कॉमन, बिकॉज देर इज नो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट, सो आई कैन टेक x ऑलवेज कॉमन, यस मैम। right? So all of these will be multiple of x because of the presence of, because of the absence of the constant term. X can always be taken common, so that's why ultimately this ideal which will be this one which is defined in this way, that it contains the polynomials with constant term 0, it is nothing but this ideal which is generated by x. बिकॉज ये सारे पॉलिनोमियल्स वही बन जाएंगे कि x कॉमन ले लो, उसके बाद वॉट एवर इज अ पॉलिनोमियल लेफ्ट देयर. सो दिस एंड this one, the other one, these are
सेम थिंग्स. सो इट्स जस्ट द वे ऑफ राइटिंग. उसको वैसे डिफाइन किया, आइडियल प्रूफ किया है, बट एक्चुअली दैट टर्न्स आउट टू बी अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स. तो हो सकता है कि आपको आइडियल प्रूफ कर दो, बट उसके बाद यू कैन पॉन्डर ओवर, ओके, इज इट अ प्रिंसिपल आइडियल? मीन्स कैन यू फाइंड अ जनरेटर so that all the elements are written as product of this? So in this case we can. So it's very easy to see that since every element of this set is going to be a multiple of x, so this is nothing but a principal ideal generated by x. So इसको कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, दिस जस्ट दिस सिंपल लॉजिक. आप एक जनरल पॉलिनोमियल सपोज कर सकते हो, a n x raised to power n, a n minus 1 x n minus 1 plus a1 into x. There will be not any a naught. Constant term is 0. So it's always to be written like x times a n x n minus 1 and so on a1. So since every polynomial can be written as multiple of x, therefore this will be true. Right. So next I am moving ahead with the more examples. So I'll put more examples in the assignment too. So I'm creating assignment two simultaneously. So I'll put all these questions which you need to be which you need to verify for ideals. I'll put those questions in the assignments. Okay. So after this, now we are going towards the next definition, which is factor ring. So now the question is where we are going to use this concept of ideal. So we are going to use this concept of ideal in the factor ring. For this, I told you yesterday कि आप पढ़ के आओगे factor group, quotient group or factor group, one and the same thing. Coset, normal group. So have you revised those concepts? Okay, so let me just ask, anybody knows what is a coset of a group? हम अभी रिंग में नहीं जाते हैं, अभी हम ग्रुप पे ही हैं, right? Let G be a group. So how you are going to define the coset? Coset कैसे define करते हैं हम? Anybody has any idea? If G is a group, H is a subset of a group, then taking any element A from G, then A into H will be the left coset, and H into A will be the right coset. Okay, and how does the elements here looks like? A, small a into small h, where H belongs to capital H. Okay, and here also you H have H into A where H belongs to H. So A be any element of G, and so we have this. Okay, so do you find okay, one thing is there, ये जो आपने मुझे definition दिया है coset का, this is right, but you need to specify for what operation this is valid. But under addition or under multiplication? multiplication. Under addition, it will be A plus H. Yes. So this definition is actually for the when the operation is multiplication, right? Because group में तो एक ही operation होता है, so you have to specify which operation you are talking about. But if we consider the group under addition, so in that case, coset definition becomes like A plus H. So this is A plus H. H belongs to H, and H plus A. So we have the left coset, we have the right cosets. But then we say that if we talk about abelian groups, like the commutativity is there, so in that case the left and right cosets turn out to be same. Okay, so that's I hope everyone recalls it. Everyone is aware about this concept of cosets under addition and multiplication for a groups, right? So H be any subset. Now do you think do you are trying to find some similarity with the ideals? Okay, so if you generate some okay, let me ask you what is H here? H be any subset, and if it happens to be a particular normal subgroup, okay, you remember the definition of normal subgroup? When left coset is equals to right coset. Yes, so that means this is going to happen. So when this AH is going to be HA, so basically you have HA inverse belongs to H. So firstly H has to be a subgroup, then if this happens, then we say it is a normal subgroup. So that's why I said कि अगर abelian होगा तो ये default satisfy हो जाता है क्योंकि commutativity होगी उसमें.
abelian group में. तो abelian group में that is why every subgroup of an abelian group is a normal subgroup. Are you aware about these results? For abelian group we have every subgroup is a normal subgroup because of this reason, that for normal subgroup we require this to be commutative, we require this to be same, and if the group is abelian, this is by default happening. So why I'm actually I cannot tell you in so much detail because otherwise this whole lecture will be gone into group theory only. I'm just trying to revise you the things just that much कि जितना हमें use करना है. So from group we Ma'am, can you define. repeat the statement once? For every abelian group, every subgroup is normal. Yes. Yes. Yeah. Every subgroup of an abelian group is a normal subgroup, right? Normal subgroup की ये definition होती है that if H be a subgroup, it is said to be normal if this property is satisfied. For all A belongs to G, if A inverse belongs to H, in that case we say H is a normal subgroup. और ऐसे भी इसको, ये दोनों equivalent चीजें हैं, इसको ऐसे भी define कर सकते हैं. Now what I'm saying, अगर group abelian होगा तो obviously तो ये AH will be same as HA क्योंकि आपकी commutativity है abelian group में. So because of that ये by default equal हो जाएंगे, तो then every subgroup will fall into the category of normal subgroup. Is that clear? Are you able to recall these results? Yes, ma'am. Okay, so what we used to do there with normal subgroups, we used to form the quotient group or the factor group. एक ग्रुप से हम दूसरा ग्रुप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो लेट n बी द नॉर्मल subgroup of a group G. In that case we can define this factor group G by n. इसको quotient group भी हम बोलते हैं. Right. So what kind of elements it's going to have? Can anybody tell me what kind of elements will be there? Let me go to the next page. So factor group, और हम बात कर रहे हैं quotient group की. So जब भी हमारे पास किसी ग्रुप में नॉर्मल सबग्रुप हमें मिल जाता है, n be the normal subgroup, then we can always define a factor group. So how this is defined? So the elements of this are defined like G plus n, where G belongs to G. और अगर multiplication operation होगा, so that is G into n, G belongs to G. So basically this is like that cosets which you are making that belongs to a particular class, the left and right coset turns out to be same, so they themselves start forming groups, and that groups are known as the factor group or the quotient group. So it's nothing but those cosets only which you have considered. बट वहां पे बस ये जो होता है, आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिडर करते हो कोसेट बनाने के लिए, A belongs to G, but here it will contain all those possible elements. Like for all G belongs to G, whatever will be this kind of elements. So this G plus n is a particular coset, right? G plus n belongs to n. This G into n is G into n belongs to n. ये cosets हैं. So the set of all cosets और उनका सारे elements ले लोगे उस kind के, that will form a group, and that is known as a quotient group. Have you studied this? Yes, ma'am. yes, ma'am. राइट. तो ये नॉर्मल सब ग्रुप उसके लिए हमारे पास होता है, उससे हम क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन करते हैं. तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इज ऑपरेशन. तो यहाँ पे हमें ये वाला चाहिए बिकॉज हम रिंग्स में कनेक्ट करेंगे इसको. बिकॉज अवर रिंग, वट एवर रिंग वी कंसिडर, एवरी रिंग इज एन abelian group under addition. We know that, right? Under addition, under the operation of addition, every ring is a abelian group. So that means under the operation of addition, whatever will be subgroups, because a ring is a group first, right? Under addition it is a group first, so it will have subgroups. So every subgroup is going to be a normal subgroup because of the
abelianness. So you just consider your ring as a group under addition, and that is an abelian group. So its every subgroup is going to be a normal subgroup. So that means I can pick those normal subgroup and I can construct these kind of factor groups there. The point which remains is there. Now we will show that the which you have constructed is factor group. The same can be कन्वर्टेड इनटू अ रिंग. अब आप ग्रुप से रिंग कैसे बनाते हो? अब मैं आपको एक ग्रुप दूं, सपोज Z, this is a group, sorry, this is a group. I ask you to convert it into a ring. What will you do? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हाँ, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि ओके, इफ आई वांट दिस टू बी कंसीडर्ड एज रिंग, देन हाउ डू आई डू द मल्टीप्लिकेशन, एंड देन वी विल वेरीफाई दोज properties of the ring. So same is going to happen. You already have factor group, because for defining factor group, all what you need is a normal subgroup, and that condition is already satisfied, that if you start from a ring, then the ring is being an abelian group under addition, so you have the normal subgroups, because every subgroup is acting as a normal subgroup. So let R be a ring and let A be a normal subgroup of R, right? अब इसको आप नोटेशन इसका चलो n रखना चाहते हो n रख लो, doesn't matter, but although मैंने उसको ring बोला है, but obviously I can find a normal subgroups of that particular ring when it is treated as a group. So if I define this R by A, जैसे मैंने अभी ये G by N लिखा था, it is just now I want you to shift to from group to ring, so I've just changed the notation, but the way it is defined is same, right? So this will contain elements like R plus A, where R belongs to R. So this, I'm telling you that this is a factor group or the quotient group. Is it fine? So all what you under what operation? Obviously under the operation of addition, because the ring is being treated as operation under addition. So now my question is, I want to construct a factor ring. So the same factor group which I have defined, if I define a suitable multiplication operation, so the same factor group will convert into a factor ring. One operation is already there, which is the operation of addition. Under that addition, it forms a group, and that will be an abelian group because of the okay, if I give you the commutativity in the ring itself. Now the question is how I'm going to define the multiplication so that from a group it becomes a ring. So for that, I'm defining this as an operation. So you define the multiplication as follows. So if you have an element S plus A and another element T plus A which belongs to this R by A, so I'm defining their multiplication like S into T plus A. I'm defining their multiplication like S into T plus A. Addition is already defined. How do you are going to add the any two elements? So if I talk about addition operation, so this S plus A plus T plus A is going to be S plus T plus A. This is something already coming from group theory. This is how, this is a group under the addition. What addition I'm talking about? This addition. This is how the elements of this group are being added. That one coset added to another coset is nothing but these elements added with themselves, and when you construct this coset, so they turn out to be same. Is it clear? उनका इस रिंग का एडिशन का ऑपरेशन ये होता है. अब इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन भी डालना है, तो आई एम डिफाइनिंग मल्टीप्लिकेशन इन दिस वे, क्योंकि शुरू में तो हमें प्रपोज ही करना होता है ना कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऑल व्हाट यू जस्ट नाउ नीड टू शो इज इफ आई डिफाइन मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, देन इट विल फॉर्म अ रिंग. सो आपको सिर्फ रिंग की जो एडिशनल वो प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ वो डिफाइन करना है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, एसोसिएटिविटी and the distributive laws. So if you verify them, it will be proved that this R by A is nothing but a ring,
and this will be called a quotient ring or a factor ring. Is that clear? Yes, ma'am. Right? So let me just give you another result. Actually, it's a theorem. This theorem statement is, let me first finish the statement. So then I will discuss about it. So let R be a ring and let A be a subring of R. सो इतनी स्टेटमेंट से आपको एक चीज क्लियर है कि आप R बाय A जो है डिफाइन कर सकते हो, फैक्टर ग्रुप तो डिफाइन कर ही सकते हो, क्योंकि R रिंग है तो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो A अगर उसका सब रिंग है तो A उसका सब ग्रुप होगा. ये हमने स्टार्टिंग में एक रिजल्ट किया था, इफ यू रिमेंबर दैट एवरी सब रिंग इज अ सब ग्रुप. अगर कोई रिंग सब रिंग है तो वो सब ग्रुप तो है ही है, मतलब एज अ ग्रुप वो सब ग्रुप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और क्योंकि अबिलियन है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो R by A इज ऑलरेडी डिफाइंड. सो नाउ लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट. सो आई एम सेइंग द सेट ऑफ cosets R plus A, R belongs to R, is a ring known as factor ring under the operations S plus A plus T plus A is S plus T plus A, and S plus A into T plus A is ST plus A. So I defined two operations because जब भी मुझे किसी algebraic structure को ring prove करना है तो I need to define the two operations. So I defined those two operations. So then this is a ring under the operations if and only if. So here is the main result. If and only if A is an ideal of R. राइट तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि एडिशन हम डिफाइन कर सकते हैं, वो एडिशन तक तो वो सेटिस्फाई है ही है, वो ग्रुप तो है ही है फैक्टर ग्रुप. जो रिंग वो एडिशनल होगा अंडर दिस डिफाइंड ऑपरेशन वो हमेशा नहीं होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ फैक्टर रिंग इफ एंड ओनली इफ ए इज एन आइडियल ऑफ आर. मीन्स मियरली सब रिंग होने से आपके पास वो फैक्टर रिंग नहीं बन जाएगा. वो फैक्टर रिंग मीन्स रिंग वाली प्रॉपर्टीज तब सेटिस्फाई करेगा. ये मल्टीप्लीकेशन तब डिफाइन होगी जब ये आइडियल होगा. सब रिंग तो वो है बट इट हैज टू बी एन आइडियल. सो जस्ट लाइक अगर आप फैक्टर ग्रुप्स में रिकॉल करो तो अगर आप G by H डिफाइन करते हो सो वो फैक्टर ग्रुप तभी वेल डिफाइंड है अगर H एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, राइट. तो फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले आपको नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप्स की हेल्प से ही आप फैक्टर ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हो. सिमिलरली हियर आप ऐसे समझ सकते हो कि रिंग्स में भी सब रिंग होने से हम फैक्टर रिंग डिफाइन नहीं कर सकते हैं. आपको सब रिंग से ज्यादा मीन्स यू नीड इट द रिंग टू बी द सब रिंग टू बी आइडियल. अगर आप आइडियल से डिफाइन करोगे मीन्स इफ दिस R by A is denoted by R plus A, R belongs to R, so this is going to be a factor ring under the above two operations if and only if A is an ideal of R. So इसका हम प्रूव करेंगे कि why this is true, कि आइडियल होना क्यों जरूरी है. So we'll have a formal proof of it, and once this is done तो हमें एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग्स का तरीका आ जाएगा कि किसी भी रिंग में अगर आपको उसका आइडियल मिल गया तो आप फैक्टर रिंग नई रिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. लाइक यू नो दिस इज अ रिंग Z, you know this is an ideal of Z, so you can define Z by NZ, and then we can have a detailed discussion what kind of elements are there in going to be Z by NZ. And similarly for many other rings, आपको किसी भी रिंग में उसका आइडियल मिल गया, you can construct these kind of rings known as factor rings, and then we will connect where they are further used and what are the connections. Okay, but before that we need to do the proof of this one. So yeah, so we'll discuss the proof next time, and yeah, that's all for today. I'm already in the process of uploading the previous lectures. Due to some technical issue I could not do that yesterday,
So I'll do that right now. The previous lectures as well as this lecture I will upload. And I will also upload the assignment during the weekend. So you please find the questions to try so that we can discuss in the next tutorial. Okay. Ma'am, could you show the previous page of factoring? Yes. मैम इससे previous वाला. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.